So welcome everyone. So guys, this is the third class of CCNP switching, and today guys, mainly we cover spanning tree protocol. So first, we will cover the basic, then we will see the spanning tree mode, and after that, guys, we will see the layer two traffic engineering. We see in layer for a layer two traffic, STP is a protocol, okay, who is responsible. So let's say if we have a two path, okay. So STP decide which path we will prefer. So let's say we have two switches and two switches they are connected via two link, and we have a point A to point B. And if they communicate from A to B, okay, and by default, let's say the traffic is going via link one, and maybe there is some requirement I want to prefer the second link for point A to point B. So in that case, guys, definitely we must understand the STP properly. So if we know that how STP work, okay, then we can easily manipulate our layer two communication. Similarly, guys, when we cover the routing, because this is very common requirement in the real world. So when we have a two path, okay, so in case of routing, we will see when we configuring OSPF or static routing or any routing, okay. In that case, guys, our routing protocol decide which path we need to prefer. So we will see that, and then definitely we will also cover the STP troubleshooting. And after that, guys, we will see the other feature port fast and BPD filter and BPD guard. And normally for our end port, okay, in the real world, what configuration we do on the port side. Okay. So let's start the first STP. If you see this topology, so as we know, guys, STP is basically used to avoid the traffic loop. Okay. So in this scenario, if you see, let's say we have a two machine, okay, host one and host three. So if they communicate, okay, and we have a two path, okay, in this topology. So the one path, if you see, let's say the traffic goes to switch three, and then switch three send the traffic to the core one, and the core one send the traffic to the switch four, and switch 4 basically send the traffic to the host 3. Okay, this is the one path. And the second path we have, let's say the host 1 send the traffic to switch 3, and the switch 3 send the traffic to the core 2, and the core 2 basically send the traffic to the switch 4, and then switch 4 आपका ट्रैफिक करेगा किसकी तरफ, host 3 की तरफ. So if you remember in the first class, I show you by default, it basically preferring the black path. But today, guys, we'll see, अगर हमें manipulate करना है इस path को, तो हम कैसे manipulate कर सकते हैं. And before we do that, definitely first क्या हमें STP को क्या properly क्या understand करना पड़ेगा. So let's see, guys, first STP. So as we know, okay, in CCNA we study STP is basically for avoiding the loop. So in the layer 2 network, when we have redundancy, so redundancy basically create a problem. And even the layer 2 packet, guys, they don't have any TTL value. So in case अगर आपका layer 2 network में क्या loop बनता है, तो वो पैकेट क्या है, कभी भी वो ड्रॉप नहीं होगा अपने आप. तो उस केस में, guys, definitely we will see when we configuring the layer 2 network design, we further also configuring storm control command, which is basically हम क्या करते हैं, अपने broadcast और multicast traffic को क्या हम limit करते हैं. So in case, guys, अगर आप जब भी आप network में क्या दो connection लगाते हो, तो एक connection क्या आपका अपने आप क्या block हो जाता है because of STP protocol. So at a time आप जितने भी redundant link लगा लो अपने नेटवर्क में, लेकिन एट ए टाइम क्या है आपका एक ही पोर्ट क्या है ट्रैफिक कैरी करेगा. So how this STP work? Okay, so if I give you the basic idea,
Then later on, we will more focus on the troubleshooting part. So by default, guys, like let's say if we have a redundancy, so point A to point B. So इस case में guys, like we have a one root switch. So जो root switch होगा वो क्या होगा आपका पूरे नेटवर्क में क्या होगा, एक ही रूट स्विच होगा, रेस्ट ऑफ स्विचेस क्या होंगे आपके नॉन रूट स्विचेस होंगे। तो हर एक ये मेरा स्विच क्या होगा, नॉन रूट होगा, और ये भी मेरा क्या होगा, नॉन रूट होगा। लेट्स से दिस स्विच वन basically I have configured as a root switch. So I will show you like in this diagram I will configure this switch as a root. तो जो rest of जो मेरे non root switches हैं they will first forward the traffic through the root. Okay. तो हर एक जो आपका कहते होते हैं जो नॉन रूट पोर्ट होगा उसका एक क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। तो रूट पोर्ट बेसिकली गाइस क्या है, रूट पोर्ट जो कि आपका क्या है, रूट स्विच की तरफ जा रहा है। क्योंकि आइडिया क्या है गाइस, लाइक पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो भी आपका ट्रैफिक जाएगा वो सारे क्या है, रूट स्विच के थ्रू होके जाएगा। और हर एक नॉन रूट का क्या होगा, आपका क्या होगा, रूट पोर्ट होगा जो कि रूट की तरफ जाएगा। So let's see guys, like by default, as we know, okay, Cisco switches, they are running PVST plus, okay. So these are the STP mode we have. So by default, the Cisco के switches हैं, they are running PVST plus, okay, which is per VLAN spanning tree. That means like in our diagram, we have a two VLAN, VLAN 10 or 20. तो हर एक VLAN के लिए अलग-अलग STP instance run करेगा। तो उसकी एडवांटेज है, आई विल शो यू लाइक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पीवीएसटी प्लस। एंड नॉर्मली गाइस लाइक इन द रियल वर्ल्ड वी विल यूज दिस फ्लेवर, ओके, आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री। सो हियर इफ यू सी गाइस लाइक बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को कोर वन को रूट बनाना है तो आई डोंट लाइक डिपेंड ऑन लाइक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गाइस क्या होता है, इन इसका इलेक्शन होता है और जिस स्विच की क्या है लोएस्ट ब्रिज आईडी होती है वो क्या है, आपका क्या बन जाता है, रूट स्विच बन जाता है। बट आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द डिफॉल्ट इलेक्शन। तो उस केस में गाइज आप क्या कर सकते हो, आप डिफाइन करते हो स्पैनिंग ट्री VLAN। तो दिस इज पर VLAN स्पैनिंग ट्री VLAN 10 और रूट, इधर आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी। तो जिस स्विच की प्रायोरिटी क्या होगी, लोअर होगी, वो क्या है, आपका रूट स्विच बन जाएगा। लाइक अर्लियर आई सेड लाइक ब्रिज आईडी, तो ब्रिज आईडी गाइस क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है आपकी प्रायोरिटी का और मैक एड्रेस का। सो बाय डिफॉल्ट switch has which has a lower priority that will become a root. So इस केस में guys like I will configure this switch as a priority 0 because this is the lowest priority। और by default priority की वैल्यू क्या होती है, 32768। तो जिस स्विच की ऑब्वियसली लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, जीरो से लोएस्ट तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स क्या है, ये स्विच क्या आपका रूट स्विच बन जाएगा। सो इस केस में गई लाइक आप ऐसा नहीं है लाइक अगर आप यहाँ पे अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है वन, तो आप ऐसे नहीं, आप इसको वन सेट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन सेट करता हूँ तो ये मेरे को कंप्लेन देगा। सो ओनली गाइज लाइक वी विल कन्फिगर दीज वैल्यू, और जो मिडल वैल्यू है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है हर स्विचेस के ऊपर, ओके। तो इस केस में आई विल यूज द वैल्यू 0, दैट मीन्स क्या मेरा ये स्विच क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा। एंड यू कैन सिंपली वेरीफाई शो स्पैनिंग ट्री। सो दिस इज नाउ माई रूट स्विच। सो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है गाइस ये क्या है, रूट स्विच की है, और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है ये क्या है, इस स्विच की लोकल है। अगर आप देखो दोनों की इंफॉर्मेशन क्या सेम है, तो लाइक ये जो रूट स्विच बना है उसका मैक एड्रेस है, और जो मेरा मैक एड्रेस है दोनों सेम है, दैट मीन्स क्या मैं खुद ही रूट। और यहाँ पे आपको मैसेज दिख भी रहा है, दिस ब्रिज इज अ रूट, ओके, दैट मीन्स क्या दिस स्विच, ये क्या स्विच क्या हमारा एज ए रूट का काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड गाइस अगर मैं सेम आउटपुट मैं स्विच 3 पे चेक करता हूँ और स्विच
4 पे चेक करता हूँ, दोज आर माई एक्सेस स्विचेस, ओके। सो अगेन गाइस, लाइक जो मैंने अगर आप सिंपली शो स्पैनिंग ट्री मारते हो तो ये पहले VLAN 1 की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है और VLAN 10 की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो जो हमने जो चेंजेस करे थे वो VLAN 10 के लिए करे, ओके। सो पर VLAN स्पैनिंग ट्री में गाइस क्या होता है, जो आपको देखो प्रायोरिटी है वो 10 दिखा रहा है। तो जो आपने प्रायोरिटी सेट करी है, क्योंकि एज वी आर रनिंग PBST 0+10 हो जाएगा। हर एक VLAN के लिए आपका क्या अलग STP चलेगा। तो जो प्रायोरिटी है वो क्या है आपकी 0+ क्या है 10 होगी। लेकिन पॉइंट क्या है, VLAN 10 के लिए भी क्या है, यही स्विच क्या है एज ए रूट का काम कर रहा है, ओके। तो भाई लाइक ये मैं बेसिक थोड़ा ब्रश अप कर रहा हूँ लाइक CCNA का, so that like we will after that we will cover the advanced thing, okay. So if we run the same command on switch 3, okay, so on switch 3, so switch 3 guy, like if you see show spanning tree for VLAN 1, show spanning tree for VLAN 10, and you can see that guy, like the first information is for a root and the second information is my own information, okay. And you can see like my MAC address is different, root MAC address is different. That means I'm not a root, okay. But if you see on this device, my this port is showing a root. That means क्या है, ये पोर्ट क्या है, ट्रैफिक को क्या करेगा, कैरी करेगा. So here guys, like ideally root, okay. So let me show you guys, like let's say from host 1 to host 3, how they communicate, okay. So let's say if we go to the host 1 and host 1 and host 3 both are in the same VLAN. So my IP address is 192.168.1.1 and my host 3 IP address is 1.3. And if we say 192.168.1.3, we have a reachability to host 3 and show IPR. So this is the MAC address of the destination. So if we ask to this switch, okay, switch 3, इस destination MAC के लिए traffic किस interface से lead करेगा? So as I told you guys, like जो root port है mainly यही traffic carry करता है, okay. So if we show MAC address, so this is the destination MAC address, okay. The destination MAC address, which is host 1, this is the destination MAC address. And if we asking the switch 3, hey, tell me for this destination MAC address where you will forward the traffic. So as I told you guys, like if you see this diagram, we have two paths. So these are my leaving interface, but I am using this link. Okay, so I'm using this link. So in this case, guys, like the reason the traffic is going towards to this direction because this is our root switch. If I will make this switch as a root, then uska result क्या निकलेगा guys? Instead of traffic right now going on this direction, अगर आप इस switch को root बना दोगे, then your traffic will forward towards to this side. That's the thing, okay guys, like for a layer 2 communication, okay, layer 2 communication क्या होती है? Layer 2 communication जिसमें आपका source IP 192.168.1.1/24 192.168.1.3/24 source और destination IP क्या है, दोनों सेम ही सेगमेंट में. That is a layer 2 communication. So the layer 2 communication handled via your STP protocol. So then you need to know, or like this case me, the only way I can forward the traffic towards to this direction if I will make this core switch as a root for VLAN 10.
So maybe let's say, what can I do? Okay, in this scenario, like, so I have a PC, this PC in VLAN 10, and this PC in VLAN 20. So for VLAN 10, the traffic flow should be like this. However, for VLAN 20, the traffic flow should be like this. How we achieve this? Okay, very simple. For VLAN 20, I will make this switch as a root. For VLAN 10, I will make this switch as a root. For this diagram, only for this diagram, this is the only way I can fulfill this requirement. Later on, like, I will also show you some more scenario, because ultimately you need to learn, okay, how we manipulate our layer 2 traffic. So in this case, like you see, right now, hope by hope, if I say, let's say, I'm going to the core switch 1, because the core switch 1 is basically carrying the traffic. So I can say same command, show MAC address. So this will show you traffic is going gigabit 0 via 1 and going to switch 4, then going to this PC. Okay, so this is the default behavior, guys. And like by default now, this is the traffic flow. Okay, like when host 1 communicating to host 3, so this is the traffic flow. And the reverse also. In switching, guys, like always, my outgoing path as well as my reverse path, हमेशा वो क्या आपके सेम रहेंगे. ओके, तो स्विचिंग ऑलवेज क्या होती है, सिमेट्रिक होती है. यू नो व्हाट इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक, लेट्स से आप यूएसए से इंडिया जा रहे हो, जो आपकी पहले फ्लाइट थी वो लंदन के थ्रू थी, लेकिन जब आप वापस आ रहे हो, मे बी लेट्स से उस टाइम पे जो आपकी फ्लाइट है वो दुबई के थ्रू है. दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक बोलते हैं, क्योंकि जाने का पाथ अलग था, आने का पाथ अलग था. ऑन द अदर हैंड सिमेट्री क्या होता है, अगर आपकी फ्लाइट लंदन के थ्रू ही थी और इवन जो रिटर्न फ्लाइट है वो भी लंदन के थ्रू ही है, दैट मीन्स कि आपने सेम ही पाथ फॉलो करा. ओके, तो राउटिंग असिमेट्रिक हो सकती है. आई विल शो यू. आपका रिक्वेस्ट लिंक 1 से जा रहा है, लेकिन जो रिप्लाई ट्रैफिक है वो लिंक 2 से आ रहा है. राउटिंग में ये पॉसिबल है, स्विचिंग में ये पॉसिबल नहीं है. So here, guys, like how we can achieve this. Okay, so simple. As I told you, I'm going to the core 2. I'm going to the core 2 and I'm making this switch as a root. So let's say a spanning tree. So I only want to manipulate the traffic for VLAN 10. So मैं सिर्फ VLAN 10 की priority change करूँगा. So VLAN 10 priority. So let's say 0. अब दोनों तरफ सेम होगी. उस केस में देन मैक डिसाइड करता है, क्योंकि मैक सेम नहीं होता. तो इस स्विच पे गाइज मैं प्रायोरिटी हाई कर रहा हूँ. स्पैनिंग ट्री VLAN 10 प्रायोरिटी, लेट्स से you can use a question mark. Okay, so the number should be between this and should be increment of 4096. इस डिटेल में भी जाना है ये ऐसे क्यों होता है. बेसिकली लाइक इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू, जो VLAN बिट होती है वो क्या होती है, 12 बिट की होती है. दैट मीन्स जो मल्टीप्लाई होगा इसका होगा 4096 होगा. दैट्स वाई जो नंबर है गाइज वो इसी इंक्रीमेंट में होनी चाहिए, मतलब 4096 प्लस. This is basically again behind the scene, okay, how they designed, the guy who made this STP protocol, okay. But in case me guy, like I can, if you let's say type any number, it will show you no, this number is not accepted. So you need to use this value. Okay, so in this case me guy, like let's say I will configure any higher value, okay, as compared to 0. Okay. As a result, if you see on a core 2, the result is show spanning tree VLAN 10. Now this switch,
should be a root, okay, for VLAN 10. Yeah, now if you see now my core 2 acting as a root switch, okay, for VLAN 10. And uska result का निकलेगा like again, if we're going to the host 1 and again communicating to the host 3, I can reach the host 3. And if see the MAC address and on a switch 3, like earlier like for this MAC, my leading interface is gigabit 0y1. If we run the command again, so my leaving interface now should be gigabit 0y2. Okay, let me say again, initiate the traffic, guys. 1.3, I can ping, and on switch 3, my leaving interface still showing gigabit 0y1. Okay, now let's understand, okay, by default, why this is happening, okay. So I believe like the other thing, make sure these port, okay, these port should carry the traffic for VLAN 10. As per this output, I doubt only I think like only ये पोर्ट ही सिर्फ अभी VLAN का 10 का ट्रैफिक कैरी कर रहा है. That's why अभी मेरे को ये इंटरफेस दिख रहा है, which is wrong, okay. But let me see the configuration of this port, okay. Because switch to switch, we always configure a trunk port and make sure they will carry all the VLAN information. So in this case, let's see the configuration, okay. So show run interface gigabit 0r2. So you see, like guys, this is my trunk port. So this is an actual configuration. So we don't depend on the actual configuration. We basically depend on the show command output. Okay. So this is a guys again another good troubleshooting tips. Okay, so don't depend on the configuration. So the verification command is show interface trunk. तो ये कमांड आपको बताती है मेरे कौन कौन से पोर्ट क्या है, ट्रंक पोर्ट है, और किस किस VLAN का वो क्या है ट्रैफिक कैरी करेंगे. ओके, सो इफ यू सी like you see my gigabit 0y2 is a trunk port and it's carrying the traffic. Okay, then going to the core 2, okay, on the core 2 side, make sure these port also working as a trunk port and carrying the VLAN information. Okay, so show interface trunk. I can see only gigabit 0y2 is carrying the traffic, but not this one. Okay, so this is a problem, guys. So ultimately, guys, like हमें अभी achieve क्या करना था? So when host 1 want to communicate to the host 3, so the first traffic will go to this interface. Through the trunk interface, it will go to core 2. Then from core 2 to the traffic should go to this interface, but this interface now having the problem. So this interface is not working as a trunk port and it is not carrying the traffic for VLAN 10. That's why जो हमारी जो अभी requirement थी वो fulfill नहीं हो पा रही, क्योंकि this link is basically creating the problem. So this is how, guys, like hope by hope, step by step, you need to troubleshoot. Okay. So in this case, guys, like I'm going to the core 2, and on a core 2, I'm configuring this port as a trunk port. So interface gigabit 0y1, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk. Then on switch 4 side, so now both ports should show as a trunk port. You can see like my gigabit 0y1, it is showing none because by default, like STP, it basically go through the listening, learning stage, and after 30 seconds, it will forward the traffic. So, or make sure I don't have that command, okay, which is a switch port allowed VLAN, none, okay.
So switch port trunk encapsulation load one queue, switch port mode trunk. So you don't necessary to be configure trunk configuration on the both side, but in the real world, guys, definitely on the both side you will do the configuration. So that's why I have done the configuration. Okay. And I'm also configuring the host name of this switch. Okay. So switch host name is switch 4. Host name switch 4. So if you see, guys, again, I'm going to the host 1 and I can see I can still communicate to the this machine. And I'm going to this switch, okay, switch 3, and asking again, show MAC address, and my destination MAC address is this MAC address. So now it should be shown my leaving interface is gigabit 0 which is it. तो इस केस में गए जो रिजल्ट था, देखो अभी ट्रैफिक किस तरफ आ रहा है, गीगाबिट 0 की तरफ आ रहा है, यानी कि इस इंटरफेस से लीव कर रहा है। ओके, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। दिस इज लाइक व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, तो होस्ट 1 है, host 3. So host 1 sending the traffic to switch 3. Switch 3 now showing to reach this host 3, I will send the traffic through gigabit 0 which is going to my core 2. Then core 2, if we run the same command, it will show the leaving interface is gigabit 0 Then the traffic will go to this machine. So this is how, guys, so you need to understand, okay, like one way like we achieve this, okay, by configuring other switch as a root. Okay, I will show you the other option also. So let's say if I show you the same command on a core 2, this traffic is going to gigabit 0 which is connected to switch 4, then switch 4 sending the traffic to the host 3. So you see, the mainly this is a deciding factor, okay, the switch 3. So switch 3 is a deciding factor. मेरे को ट्रैफिक इस लिंक के थ्रू भेजना है या इस लिंक के थ्रू भेजना। The reason why, because now if you see for VLAN 10, this port working as a root port. Okay, so root port guys क्या होता है, हर एक कोई सारे switches के नॉन रूट पोर्ट है, और क्योंकि रूट पोर्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या चेक की जाती है, लिंक की कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे आपका जो फास्ट इथरनेट है इसकी कॉस्ट क्या होती है, एसटीपी में बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपकी 19, और जो गीगाबिट है इसकी क्या होती है आई बिलीव 4, और जो 10 गीगाबिट है उसकी क्या होती है 1 होती है। दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। Again, we don't depend on the default value. Let me show you like this in detail. So let's go to this switch. Okay, understand this. Okay, why this port working as a root. And again, if you want to modify the traffic, again मैं चाहता हूँ without still ये switch ही क्या आपका as a root का काम करेगा, but still जो मेरा traffic है वो ऐसे जाना चाहिए। Let's see. Okay, the point is mainly इस link के through जाना चाहिए। Okay, let's see. Okay, how can we achieve this? Okay, so here guys, like you see, like you have the view of the topology. In the real world, let's say you are joining a company network, okay, उस केस में guys आपको पता नहीं है switches कहाँ से कहाँ connected है, but the only thing आप देख रहे हो host 1 और host 3 आपस में communicate कर रहे हैं। So you will run the command like let me give you the whole picture. Okay, show spanning, let's say you don't have a view the topology, show spanning tree a detail. So this is the command. So this is a command and we will see the output for not for VLAN 1. Let's see the output for VLAN 10. Okay, so this is a VLAN 10. So if you see
for VLAN 10. This is the information for VLAN 20. And this is the information for VLAN 10. So for VLAN 10, guys, if you see gigabit 0 this is working as a root port. And to reach the root port, okay, the cost is basically, you can see the cost of the root port is 4. तो गीगाबिट बाय डिफॉल्ट गाइस जो कोस्ट वैल्यू है वो क्या 4 है, तो लो जिस पोर्ट की लोएस्ट कोस्ट होगी वो क्या है आपका पाथ क्या होगा प्रेफर होगा. लाइक अगर आपने इन CCNA इन OSPF इफ वी हैव टू पाथ द लिंक व्हिच हैज द लोअर कोस्ट दैट विल बी माय प्राइमरी पाथ. सिमिलरली STP में भी क्या है द लिंक व्हिच हैज द लोअर कोस्ट टू रीच द रूट दैट विल बी माय प्राइमरी पाथ. ऐसे आपको क्या कंपेयर करके पढ़ना है, तो उस केस में क्या आप इजीली ग्रैब करोगे. ऑन द अदर हैंड गाइस यू सी ये कोस्ट कैसे कैलकुलेट होती है. ओके लेट मी शो यू. ओके सो हर 2 सेकंड बाद क्या हेलो पैकेट जाती है विच इज योर BPD. ओके सो जो कोस्ट क्या है टोटल क्या है 4 है, और जो मेरा सेकंड लिंक है गीगाबिट 0 ओके फॉर VLAN 10. इस केस में गाइस क्या है जो पाथ कोस्ट है पोर्ट कोस्ट है और ये डेजिग्नेटेड पाथ कोस्ट है, ये दोनों क्या प्लस हो जाती है. इसमें गाइस जहाँ पे आपको पाथ कोस्ट नहीं दिख रही दैट मींस क्या है इस लिंक के थ्रू आपका जो रूट स्विच है वो क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड. ओके जो आपको सिंपली सिर्फ कोस्ट दिख रही है पाथ की और उसके पोर्ट की कोस्ट नहीं दिख रही दैट मींस क्या है वो डायरेक्टली कनेक्टेड आपका रूट. और इस केस में गाइस यू सी 4 + 4 टोटल क्या हो जाएगी कोस्ट क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी. अल्टीमेटली गाइस क्या जो दूसरा लिंक है बस उस लिंक पाथ के थ्रू आपका जो रूट पोर्ट है वो क्या डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है. लाइक इफ यू सी द डायग्राम, सो अगर आप इस डायग्राम में फ्रॉम स्विच 3 पर्सपेक्टिव इफ आई वांट टू रीच द कोड रूट स्विच. ओके जो रूट स्विच देखो एक तो ये पाथ है आपके पास. So this is the one path. Okay. So through this path, I can see I'm directly connected to the root. So this is a root switch, right? Another path I have. First, we will send the traffic to this side. Then send the traffic to this side. Then I will send the traffic to this side. तो ये मैं स्विच 3 के पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ. इन केस इसे क्या है इसको रीच करना है कोड 2 को रीच करना है. तो लेट्स से अगर मैं 4 + 4 + 4, लेकिन अब इस स्विच को बस इतनी विजिबिलिटी है मतलब ये इसको इसी को देख रहा है आगे इसको फर्दर नहीं पता चल रहा. पर अल्टीमेटली गाइस इस तरफ टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी 4 आ रही थी. अगर हम हमारे पास डायग्राम का व्यू है तो 4 4 दैट मींस के टोटल 12 कॉस्ट आ रही है. और ये मेरा पाथ क्या है दैट्स वाई मेरा क्या रूट पोर्ट नहीं है. तो हर एक स्विच का एक ही रूट पोर्ट होगा जिसकी कॉस्ट क्या होगी लोएस्ट होगी. अगर लेट्स से मैं इस लिंक की कॉस्ट मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, तो इस केस में गाइज क्या होगा आपका ये स्विच इस पोर्ट को क्या बना देगा रूट पोर्ट बना. तो जो एंड मशीन है होस्ट 1 होस्ट 3 वो इस लिंक के थ्रू जाएंगे इवन दो आपका ये स्विच क्या है एज ए रूट पोर्ट काम कर सॉरी रूट स्विच काम कर. Okay, so the command is very simple. Okay, so if you remember like in OSPF how we manipulate the cost, simply we go to the interface IP OSPF cost and जो भी आपको लिंक को प्रेफर करना है we will set the lower cost value. Similarly here we will set the STP spanning tree cost value. So let's say interface gigabit 0 spanning tree. So there is 2 commands. If you say span tree cost, this will impact all the VLAN. But we don't want to impact the other VLAN. We will only want to
modify the traffic for VLAN 10. So we say, let's say VLAN 10 cost, then we can define like this value. So let's say any higher number, 20,000. Yeah, that is our cost fees. So you see, like this is the higher value I assign. If you see the result now, let's say I'm going to the host 1. I'm still checking the connectivity. We still have our reachability. And going to the switch 3, on switch 3, show MAC address, and destination MAC address is, this is the destination MAC address. And if you see my interface, my leaving interface, okay, now my communication is broken. Okay, my communication is broken, but if you see, guys, show spanning tree, this interface is now working as a root. So I told you guys, like earlier this port working as a root port, but now gigabit 0 via 1 become a root. Okay. So 0 via 1 become a root for VLAN 10. Let's see only for VLAN 10 specific. But why our communication is broken? Okay, let's troubleshoot this. Okay, why our communication is broken? So it takes some time, guys, like STP. Again, guys, like we are running PBST, the conversion speed is very slow. What is conversion speed? Moving the traffic from one link to another. That is the conversion speed. Okay, let's say if your primary path goes down and the traffic is moving to the secondary link, उसको conversion speed बोलते हैं. Okay, so इस case में, guys, like you see on switch 3, now my leaving interface should be gigabit 0 via 1. Why it is not showing the MAC address? Show MAC address table for VLAN 10. So yeah, so if you see, guys, like the leaving interface showing gigabit 0 via 1. Okay, for all the VLAN 10. Any question up to this point? The MAC is incorrect. Yeah, I know this is the MAC address, I believe. I forget the 5. So this is the MAC address of the machine, but my leaving interface is gigabit 0 via 1. Any question up to this point? You see, like how I achieve the same thing, but how I manipulate the traffic. First, we change the root switch. Second, I change the root port. Okay. But ultimately, both I use to manipulate the traffic. Okay. And this is like you can only do if you have good understanding of STP protocol. Any question? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. If you don't have any question, like we will continue the class. No, sir, no. No questions. No question. Clear. Okay. So the next thing, guys, like the convergence speed, like in the real world, guys, definitely you don't run the default STP protocol. Okay, so Cisco switches, they come with this STP, PVST plus, which is basically per VLAN spanning tree. Nexus switches, okay, they come with default rapid spanning tree. So in the real world, guys, definitely if you see the convergence speed in your LAN, layer 2 network, so you will run RSTP on all the protocol. Okay. This is the first thing. And the port which is going to the end machine, on those, you will use a port fast feature. Okay. And ultimately, guys, in this case, if we have a multiple path, let's say from host A to host B, if by one link goes down, then within a 2 or 3 seconds, okay, your traffic is basically moved to the another link.
So let's see guys, like first, how we can change this STP flavor. So basically guys, like what we need to do on all the switches, we need to change the mode, okay? So if you see by default, spanning tree mode, question mark. So these are the default, this is default. This is I'm talking about, okay? And this is like multiple spanning tree, okay? This is like using like, let's say if you have a like 500 VLAN, okay? Very big network, okay? Because you see like every VLAN running their own STP, which is basically taking more resources. So you can, through the multiple spanning tree, okay, आप अपने let's say आप एक logical group बना सकते हो, like from 1 to VLAN 1 to 50, I have a one STP instance. 51 to 100, my second STP instance. Still आप ऐसे logical instance बना के you can modify your path. But to be honest, okay, I have been like working from last 12 year, okay. मैंने नहीं देखा MSTP because in the enterprise, like maybe like we have around 50 VLAN or around 100, not more than like 50 or 100 VLAN. I never seen that. So here, guys, like I'm using like rapid PVST, but some company I seen, they forget to configure the rapid PVST on all the switches. Let's say on some switches you run this command and some switches you don't. So how you figure out, okay? How you figure out, like simply show spanning tree. First, you see like this switch is showing RSTP. But the mainly, if you see this output, okay, like peer STP. So this is saying your gigabit 1 and 2, those switches not running the same STP mode. So if you see this output, okay, like your peer, your neighbor is running different STP mode. इस केस में गई like जो आपका एंड मशीन है, जो एंड क्लाइंट है, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. Still अगर आप you see like they all the STP, they have a backward compatibility to each other. As an end user, okay, let's say if I'm going to the host one, and if I see the connectivities, I still have a connectivity. Even though one STP, one switch running rapid PVST, other is running PVST plus, and the user को कोई impact नहीं पड़ेगा. The disadvantage of this, okay, obviously जो अभी आपकी requirement है, so you need a faster conversion speed. As some switches running default STP mode and only few are running RSTP, आपको end result नहीं मिलेगा. आपको faster conversion speed नहीं मिलेगी. So in that case, definitely make sure if you see this output, peer STP, clearly you can tell, hey, your peer is not running rapid PVST. Can you change the STP mode? So the point is, guys, like on every switches, you need to configure this command: spanning tree mode rapid PVST, switch 3 spanning tree mode rapid PVST, spanning tree mode rapid PVST. Then only, guy, like you see now, if you see show spanning tree again, so now this peer STP command is gone. That means all your peer, okay, they are running the same STP mode. Another guy, like this is like I seen this is a common mistake. I seen like some people maybe like you only miss one or two switches. Let's say like in my company, like we have like almost 100 plus switches, okay. Okay, that's the other thing. Okay, they are in a stack, so not we are not managing like all the hundreds which is individually, but because like we have a stack, we will cover the stack later on. Okay, but the point is if you have let's say 20 or 25 switches, make sure you run this command on all the switches. Okay. Yeah. Another troubleshooting, the main thing here, this type is P2P. So P2P, guys, means your link is full duplex. Sometime
I have seen the output here like P2P. Instead of P2P, I see the output SHR. Okay. So this is also, this is not STP problem. Okay. This is basically, that means, let's say I have a switch that is connected to my another switch. And this link is, let's say, in half duplex. So here then in STP, okay, I will see the output SHR. So P2P, that means your link is basically in full duplex mode. But if you see your link somehow they are in half duplex setting, okay. So some side, let's say someone configure the port setting speed manual, duplex is manual, and this side is auto. So one side is auto negotiation, other side is manual setting. As a result, your maybe link in half duplex, okay. But this is a one indicator, okay. You can see link in half duplex, okay. But later on, guys, like we will see the troubleshooting, okay, like show interface status, like in case you are getting slowness because of half duplex. So this is the command, guys, I mainly use on the switches when I'm doing the troubleshooting, okay. Make sure all my interface in full duplex. And this is also showing like how many my port are connected, and this port working as a trunk port. That means they are carrying all the VLAN information. Not only in the real world, you also give the description. So here you will see the description, like this port connected to my this server. This port is connected to my core switch. So in the real world, you will also give the description. Okay. This is the command, guys. Okay. Another troubleshooting command in spanning tree, which is, let's say, guys, I have this network. So they are communicate properly, and I got a ticket. Hey, 1 hour back, I see like this system are disconnected, but right now they are working fine. In that case, guys, you see like in the routing protocol, like show IP BGP summary, show IP OSPF neighbor, they are sharing the uptime. Like from last 1 hour, we are stable. Similarly, guys, like let's say if any fluctuation happen in your LAN, okay, in layer 2 network, STP tell you, okay. You can run like show span tree detail. Let's say you have a fluctuation in for VLAN 10 or any VLAN, okay. You can see the timer. So let's say if they complain like 1 hour back, okay, and your timing is also showing here like a STP change occur from last 1 hour, that means there is something wrong in your layer 2 network, okay. So any link up down happen, so you can still further troubleshoot, okay, like अभी LAN में ऐसा कौन सा चेंज हुआ था जिसकी वजह से STP दिखा रहा मेरे को यहाँ टाइम. So any question regarding up to this point? किसी ने ये ऑब्जर्व करा है आउटपुट लाइक पीयर STP शेयर्ड या ये टाइमर चेक किए कभी पहले STP में? Okay, so yeah, that is it, guys. Like for today class, okay. Tomorrow we will cover the like more in STP. So mainly, guys, we will cover the STP port fast feature and some of the other STP feature. Tomorrow or Monday? Tomorrow. Okay. So the thing is, guys, like जो क्लास टाइमिंग रहेगी वो मंडे से संडे तक ही रहेगी, बट फ्यू डेज के लिए लाइक एज मेरे को ऑफिस जाना पड़ता है,
तो उन दिनों क्लास नहीं होगी। सो आई विल टेल यू लाइक इन एडवांस, लाइक आज क्लास है कल नहीं है, ठीक है। और क्लास 1 घंटे की रहेगी, लेकिन 9 to, मे बी आई विल चेंज द टाइम, ओके 9:30 टू करूँगा मैं, 9:30 to 10:30। Okay, so tomorrow we have a class 9:30 p.m. IST. Okay. Any question regarding today class, guys? Like STP. But those like who are working, they can also share their like the issue you face in STP or any other layer 2 network. But mainly, guys, like this is the thing. Okay, like you need to know like STP में root कौन सा है और कैसे path को manipulate करना है, और लाइक जो पीयर एसटीपी शेयर, ये मैंने इश्यूज देखे हैं। इसके अलावा लाइक या नेक्सस में थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि वहाँ पे जब डीपीसी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में अलग परफॉर्म करता है एसटीपी, ओके। बट लेटर ऑन लाइक व्हेन वी आल्सो कॉन्फ़िगर द पोर्ट चैनल, तो पोर्ट चैनल पे भी दिखाऊंगा एसटीपी में क्या आउटपुट देखेगी आपको, ओके। बट दैट इज इट, ओके, फॉर टुडे क्लास। Any question? Still you have a 5 minute, you can ask me. सर ये आज आज का जो वीडियो है ना, ये कब हम्म। तक मिलेगा रिकॉर्डिंग? मिल चुका। सो फर्स्ट लाइक गाइस, आपको कंफर्म करना पड़ेगा आप कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हो, फिर आपको जो भी अभी तक मैंने फीस मतलब सबमिट नहीं करी अभी, तो मैं फाइनल कंफर्मेशन जो मेरे को फीस सबमिट कर देंगे तो मैं उनको एक फोल्डर बना दूंगा, और उस फोल्डर में हर एक वीडियो क्या रिकॉर्डर उसी टाइम अपडेट होती रहेगी। ठीक है सर। ओके। हेलो। यस यस। यस रजत। सर मेरी एक क्वेरी है। हम्म जैसे लाइक a lot of times we get incidents from the site that their site goes down, okay? हम्म हम्म And when my seniors work on those incidents, they mention that it was due to the STP reconvergence. हम्म। So on those type of incidents, like how we need to troubleshoot, like from its starting point. So that is the thing, okay. Like first, I believe site completely down due to STP convergence speed that Mhm. make no sense. The reason, let's say, Means uh, site goes down and after like a minute it comes up. okay, so I mean, like, are they doing any activity? Let me No, give no. let me give the Mhm. example. Okay, let's say I have this existing setup. Okay, I have existing this setup. And in case, let's say I'm making any VLAN, okay, let's say I have configured some of the PC in VLAN. I basically extend this network, okay. So I have a requirement, hey, Gurpreet, can you make a new VLAN? This is our different project, okay, and make sure they are in. So let's say I configure a new VLAN for VLAN 30. So this is my new configuration on my existing network. So on this trunk port, like in the real world, I told you, we always configure pruning. I always configure pruning, and this is my new requirement. Okay, I want to pass the new VLAN over those link. So let's say on the trunk port, I have configured the pruning command, okay, which I show you like interface trunk allowed VLAN 1020. Okay, so interface, so show run interface all my trunk port in the real world. They will use the command switch port trunk allowed VLAN. So earlier, guys, like we have an existing VLAN 11020. So I mean, so this case me, I want to
pass the VLAN. Okay, I want to pass the VLAN, which we recently created. Okay, so most of the people, if they accidentally did this mistake, okay, let's say switch port trunk allowed VLAN 30, इस केस में obviously जो आपका existing setup है वो क्या हो जाएगा, completely down हो जाएगा. But I know like if we want to add a new VLAN, we always use this keyword, okay, add. तो अगर आप रियल टाइम में ये एक्टिविटी कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ इट. तो अगर आप सोचे ओके इस एक्टिविटी को मैं अभी कर सकता हूँ रियल प्रोडक्शन में क्योंकि आई डोंट हैव एनी डाउन टाइम. ओके, तो इस केस में या यू कैन डू दैट बिकॉज लेट्स से इफ आई ऐड दिस VLAN and if you see show interface trunk, so the spanning tree only impacting this new VLAN. Okay, so there is no VLAN. Let's create the VLAN first. So spanning tree only basically going listening and learning state. So we are running rapid spanning tree. Okay, so it's not showing listening and learning state. But my point is, guys, like you see, like STP might be show for the new VLAN. Okay, it is not forwarding the traffic because this is a new configuration and your existing setup will not be impacted only because it will only impact your new VLAN. So उस केस में अगर आपकी जो साइट डाउन होती है तो फर्स्ट चीज क्या चेक करनी है आपको, शो स्पैनिंग ट्री डिटेल. क्या चेंज हुआ है अभी लैन में जिसकी वजह से STP क्या है रिकन्वर्ज करना नेटवर्क. तो उस चेंज को ढूंढो. जब तक कोई चेंज कुछ भी हो सकता है, कोई आपका लैंड का इंटरफेस आपको वेयर डाउन हुआ. सो टुमारो आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस कमांड. ओके, जो पोर्ट फास्ट फीचर क्या करता है. बट इस केस में अगर वो ऐसे टिकट को क्लोज कर रहे हैं, ओके दिस इज डाउन बिकॉज ऑफ STP चेंज रिकन्वर्जेंस. तो नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए, जो चेंज क्या हुआ नेटवर्क में ऐसा जिसकी वजह से STP ट्रिगर मतलब ट्रिगर हुआ. ओके, उसका चेंज ट्रिगर हुआ STP. तो सिंपली उस केस में आप टिकट ऐसे क्लोज नहीं कर सकते भी हाँ माई साइट इज डाउन बिकॉज फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप शुड बी आपके नेटवर्क में लैंड में कोई पोर्ट डाउन हुआ उसकी वजह से STP ने सारा मतलब नेटवर्क रिकन्वर्ज करा. एंड एज लॉन्ग एज इफ यू रनिंग रैपिड स्पैनिंग ट्री तो उस केस में यार एंड यूजर को तो पता लगना ही नहीं चाहिए. जब वो टिकट रेज करेंगे उससे पहले ही कुछ सेकंडों में इशू सॉल्व हो जाएगा. Are you running a rapid spanning tree in your network? इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था. Who asked the question? Are you running a RSTP? So like actually they have a lot of devices in the downstream network. So I'm not sure whether those devices are running RSTP or not. So yeah, But so on Cisco, yeah. you can check, let's say the downstream devices, let's say managed by other, show spanning tree. If they are saying the downstream devices, my neighbor device is showing clear STP, that means they are running different STP. Mhm. If you see P2P, that means they are running same STP mode. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. हाँ, इस केस में डेफिनेटली सम स्विच इज रनिंग रैपिड, सम स्विच इज रनिंग डिफॉल्ट. उस केस में भी कन्वर्जन स्पीड काफी स्लो होएगी. मे बी दैट इज कॉजिंग द इशू जो तुम्हें इशू आते हैं दोस्त. Yes, because I haven't worked on those incidents, but I just saw their comments that it was due to the STP reconvergence. Okay, then see you tomorrow, guys, 9:30 p.m.